Today we will discuss about Ajax. Ajax is also a part of web designing and web application development. It stands for Asynchronous JavaScript and XML. Ajax is not a programming language. यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. बेसिकली हम लोग इसका यूज करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑन द वेब पेज, which means that it is used to access the data from the web server to the web page, which means that we need hypertext transfer protocol request and response. Web server works always on the basis of request and response. So we need any server side scripting language like PHP, ASP or JSP. These are all server side scripting language implement the Ajax to load the data after proper response through the web servers, which means that Ajax is a combination of web browser built-in XML HTTP request and HTML DOM. HTML DOM के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल किस तरह से काम करता है. You can view my previous videos upon HTML DOM. HTML page contains div. This section will display the data. देखिए वर्किंग कल्चर हमारे Ajax का कुछ इस तरह से है. This one is the web browser, right? This one is the server. HTTP request create a response and redirect to the browser. Browser send HTTP request to the server and server create response and send back to the web browser without a refresh the web browser. This one is very important feature of this Ajax. It will load the data from this web server without refreshing this web page. This one is the greatest advantage of Ajax, right? We will use here various types of functions to create function using JavaScript like this one. यहाँ देखिए XML HTTP request, ये एक ऑब्जेक्ट क्लास है और ये ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल ले लिया XHTTP. XHTTP on ready state change, this will call this function. और ये फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा रेडी स्टेट अगर 4 है, this dot status 200 के इक्वल है, it will give you the proper response, right? This dot response text, कहाँ से ये टेक्स्ट को लोड करेगा, तो info.txt. This page will loads the data whenever the web page call this function load doc. इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके अंतर्गत हम लोग एक दो पार्ट्स की चर्चा करते हैं, राइट? यहाँ देखिए सबसे पहला पार्ट HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. इसका काम है कि ये सर्वर से रिक्वेस्ट को क्रिएट करने का काम करता है. We will create request object by using XML HTTP request. The variable of this type able to send the request to the web server, right? And create XML HTTP request. अब देखिए यहाँ पर दो तरह की बातें हैं. ओल्ड ब्राउजर और न्यू ब्राउजर के सेंस में काम करते हैं. window.xml HTTP request for modern browser and for the old browser ActiveX object Microsoft XML HTTP. This object works for the older Internet Explorer browsers and this one will works for the new web browsers, modern web browsers. On ready state change, यानी कि सर्वर अपना स्टेट को चेंज करता है. रेडी स्टेट में देखिए बहुत सारा स्टेट्स है. 0 रिक्वेस्ट टू इनिशियलाइज, 1 server connection established, 2 request received, 3 processing request and 4 1 request finished and response is ready.
यानी कि ऑन रेडी स्टेट चेंज अगर रिक्वेस्ट 4 है, it will give the response, which means that the request finished and response is ready back to the web browser. Similarly, the status of server 200 okay, 403 forbidden and 404 page not found. ये सारे हम लोग पहले से भी जानते हैं और कहता है किसी के बेसिस पे इसकी कोडिंग होती है। XML एक वेरिएबल है XML HTTP रिक्वेस्ट का। ऑन रेडी स्टेट चेंज में दिस रेडी स्टेट को चेक करें, अगर 4 है और सर्वर स्टेटस 200 है यानी ओके स्टेटस है और बीइंग रेडी टू सेंड द रिस्पांस फॉर यूजिंग स्टेटस 4, it will gives the proper response from this file. Okay, and here the ID, result ID, which gives the desired output inside the deep section. Now we will give a simple example about Ajax. Load XML load definition Ajax. Load doc, जैसे ही load doc फंक्शन को कॉल करेगा on click this button, then it will loads this function load doc, right? XML HTTP request, this is the object of this variable of object XML HTTP request. Ready state checks A4 and this status 200. Ready state 4 ready to response, and अगर status का 200 okay status है, then it will result ID in your HTML. Ajax is not a programming language but used to load from file without a refresh the web browser. This will be a good definition, right? And will load whenever user click upon this button. You can view the output of this code. Now load definition Ajax, and here a button appear giving message, click, gives the output. Can refresh this one again click, this will always give the response without refreshing your browser. One thing you should mark here, this page is not refreshing but able to load the content which are response by the web server, right? This is the best example of Ajax. We will also give you an examples through PHP, ASP and JSP in upcoming videos. Thank you viewers for watching my video.